Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, today I will solve some problems of exercise 1.4 based on binary operations. The first question is determine whether or not each of the definitions of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. The first one is on Z plus. Z plus means the set of positive integer defined star by A star B is equal to A minus B. We have to check whether star is a binary operation or not, okay, on the set of positive integer, okay. तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? Let A comma B belongs to Z plus, that is A and B be any two positive integers, be any two elements, and A is greater than B. हम लोग क्या मान लें? A is greater than B. Then A star B is equal to A minus B. Since A is greater than B, therefore A minus B also greater than 0, and it is a positive integer. So A star B belongs to Z plus. But if A is less than B, then A star B is equal to A minus B, which does not belongs to Z plus. That is, when A is less than B, then A minus B. Suppose A is 5, B is 7, then A minus B, that is minus 2, which does not belongs to Z plus. But in this case, when A is greater than B, suppose A is 7, B is 5, then A minus B, that is 2, which is positive. In this case, A minus B belongs to positive integer, but in the second case, that is when A is less than B, then A star B is equal to A minus B does not belongs to Z plus. So, for all A comma B belongs to Z plus, A minus B may not be belongs to Z plus as mentioned above. Therefore, star is not a binary operation. Therefore, star is not a binary operation for Z plus. The next is on the set of real number define star by A star B is equal to AB square. Okay, इसको हम कैसे करेंगे? We'll take any two real numbers. Let A comma B belongs to R, be any two elements, Then the definition A star B also must be belongs to R. Then we say star is a binary operation. A star B is equal to what? AB square. Here A is a real number, B is also real number. And by the definition, A star B is equal to A means real number into square of another real number. Real number multiply with square of another real number is also a real number, that is which belongs to R. So star is a binary operation. Star is a binary operation on the set of real number. Question number 4 is on Z plus. Z plus is the set of positive integer define star by A star B is equal to modulus of A minus B. Okay. So solution, we will take any
two arbitrary positive integers. Let a comma b belongs to z plus b any two elements, that is a and b are two positive integers. Then a star b modulus of a minus b, that is difference between two positive integers. एक इंटीजर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज मॉडुलस साइन है. मॉडुलस साइन है मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेदर ए मे बी ग्रेटर देन बी और ए मे बी लेस देन बी. ए बी से बड़ा होने से भी पॉजिटिव है, ए बी से छोटा होने से भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है, मॉडुलस का अंदर है. जब मॉडुलस होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो A star B belongs to Z plus. Therefore, star is a binary operation. Star is a binary operation on Z plus. Here Z plus is the set of positive integers. Question number 2 is, for each operation star defined below, determine whether star is binary, commutative or associative. Here on Z define a star b is equal to a minus b. Here Z is the set of integer. इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं आया है इसमें. तो a star b is equal to a minus b. If we consider a and b are any two integers, then their difference is always an integer. It may be positive or negative. इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं आया है, जस्ट इंटीजर होने से ही एक क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा. ओके, सो फॉर लेट a comma b belongs to z, b any two elements, b any two elements, therefore a star b is equal to a minus b is also belongs to the set of integer z. Hence star is a binary operation. Star is a binary operation. Okay. जब स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो अभी हम लोगों को क्या देखना है, चेक करना है वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. तो कम्यूटेटिविटी फर्स्ट, कम्यूटेटिविटी. ओके, कम्यूटेटिविटी का क्या कंडीशन है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन वी से स्टार इज कम्यूटेटिव. ओके, सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी एनी टू एलिमेंट्स, any two elements, then by the definition a star b is equal to a minus b and b star a, just to interchange a and b, so in the definition also you interchange a and b, so it will be b minus a. Therefore a star b not is equal to b star a for all a b belongs to z. Therefore star is not commutative. Star is not commutative. Next is associativity. Associativity के लिए हम लोग we consider any three elements of the set Z. So let A, B, C belongs to Z, B, any three elements. तो एसोसिएटिव शो करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. ओके,
दिस इज द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी। इसमें क्या करना है, ए स्टार बी इसको फर्स्ट ऑपरेट करना है, देन फॉलोड बाय द एलिमेंट सी। इसमें क्या करना है, बी स्टार सी इसको पहले ऑपरेट करना है, देन फॉलोड बाय द एलिमेंट ए। ओके, तो फर्स्ट विल फाइंड ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी, दैट इज व्हाट, ए माइनस बी स्टार सी। नाउ यू कंसीडर वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सो ए स्टार बी, फिर ए स्टार बी का जो डेफिनेशन है वो अभी अप्लाई कीजिए। तो ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। हेयर फर्स्ट एलिमेंट इज ए माइनस बी माइनस सेकेंड एलिमेंट इज सी, सो इट विल बी ए माइनस बी माइनस सी। Next, to find the right hand side, that is A star B star C is equal to A star। अभी जो ब्रैकेट में इसको फर्स्ट ऑपरेट करना है, B star C means B minus C। You consider it is single element and it is another element A star B। A star B means definition का हिसाब से A minus B, that is A minus B means this B minus C, that is A minus B plus C। So we found that A star B star C not is equal to A star B star C. Therefore, star is not associative. Therefore, star is not associative. Second question is on Q, where Q is the set of rational number, define A star B is equal to AB plus 1. First, we need to check whether the star is a binary operation or not. Okay, so to check the binary operation, we need to consider any two arbitrary elements of the set of definition, that is Q, on the set of integers. So first, let us consider A and B belongs to Q, that is set of rational numbers, be any two elements, that is A and B are any two rational numbers. Therefore, A star B is equal to A into B plus 1, product of two rational numbers plus 1, again a rational number which belongs to Q. Hence star is a binary operation. Star is a binary operation. So next is commutativity. Let AB belongs to Q, be any two elements, then by the definition A star B is equal to AB plus 1, and B star A just interchange A and B, then we will get A and B को interchange करने से BA plus 1, B into A which is nothing but AB plus 1. So क्या मिला है, A star B is equal to B star A. Therefore, star is commutative. Okay. Next is associativity. Let ABC belongs to Q, be any three elements, तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो कंडीशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग पहले फाइंड करेंगे। सो ए स्टार बी स्टार सी, फर्स्ट दोनों एलिमेंट्स में हम लोग ब्रैकेट दिया है तो इसको पहले ऑपरेट करना है। ए स्टार बी मीन्स ए बी प्लस 1,
then star C. Okay. Now you consider AB plus 1 a single element. तब ये definition को देखिए, A star B is equal to AB plus 1. इसको कैसे लिखा था? A into B, that is product of these two elements plus 1. तो इसमें भी क्या होगा? Product of these two elements, that is AB plus 1 into C plus 1. If we simplify it, we will get ABC plus C plus 1. Now we will find A star, B star, C. अभी क्या क्या है? लास्ट दोनों एलिमेंट्स में ब्रैकेट दिया है, तो A स्टार B स्टार C एज पर द डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन B स्टार C क्या होगा? BC प्लस 1. नाउ फिर डेफिनेशन को देखो, A स्टार B मीन्स AB प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स प्लस 1. यार दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए इनटू BC प्लस 1 प्लस 1. सो इट विल बी ABC प्लस A प्लस 1. अभी दोनों को कंपेयर कीजिए, A स्टार B स्टार C, और A जो है दोनों को कंपेयर कीजिए. सिंस A स्टार B स्टार C नॉट इज इक्वल टू A स्टार B star C, therefore star is not associative, hence star is not associative. Okay, this is the answer. Question number 3 is, consider the binary operation conjunction on the set 1 2 3 4 5 defined by a conjunction B is equal to minimum of AB. Write the operation table of the operation conjunction. Okay, here A conjunction B is equal to what? Minimum of AB. These are the values of A and these are the values of B. AB means 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So A conjunction B is equal to minimum of AB. फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो रो का जो एलिमेंट है 1, इसको फिक्स्ड करेंगे. इसको फिक्स्ड करके 1 and 1, ये दोनों जो कंजंक्शन ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करने से व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 1 and 1, दैट इज 1. मिनिमम ऑफ 1 and 2, दैट इज 1. मिनिमम ऑफ 1 and 3, 1. मिनिमम ऑफ 1 and 4, 1. मिनिमम ऑफ 1 and 5, 1. ओके, सो नेक्स्ट इन द सेकेंड रो, दिस इज 2 and 1. 2 and 1 का मिनिमम दैट इज 1. 2 and 2 का मिनिमम यू कैन राइट 2. 2 and 3 का मिनिमम 2. 2 and 4 का मिनिमम 2. 2 and 5 का मिनिमम 2. नेक्स्ट द थर्ड रो 3, जो एलिमेंट्स 3 है इसका और 3 and 1 मिनिमम ऑफ 1 and 3 इज 1. मिनिमम ऑफ 2 and 3 दैट इज 2. मिनिमम ऑफ 3 and 3 दैट इज 3. मिनिमम ऑफ 3 and 4 3. मिनिमम 3 and 5 3. नेक्स्ट 4 के लिए minimum of 1 and 4 1, minimum of 2 and 4 2, minimum of 3 and 4 3, minimum of 4 and 4 4, minimum of 4 and 5 4. अभी 5 के लिए for 5 minimum of 1 and 5 is 1, minimum of 2 and 5 is 2, minimum of 3 and 5 is 3, minimum of 4 and 5 is 4, minimum of 5 and 5 is 5. This is the operation table. Question number 6 is, let star be the binary operation on the set of natural number given by A star B is equal to LCM of A and B. Find 5 star 7, 20 star 16. Question number 2 is star is commutative. Question number 3 is star is associative. Question number 4, find the identity of star in N. First part of question number 6 is, we need to find 5 star 7 and 20 star 16. So 5 star 7, by the definition 5 star 7 means LCM of 5 and 7. तो 5 and 7 का LCM क्या होता है वो फाइंड कीजिए, दैट इज 35. एंड 20 star 16 जस्ट फाइंड LCM of 20 and 16 and it will be what? 80. LCM of 20 and 16 is 80. Commutativity for all A comma B belongs to the set of natural number, A star B is equal to LCM of
A and B, and B star A is equal to LCM of B and A. Now LCM of A and B is equal to LCM of B and A. दोनों एक ही बात है. LCM of A and B is nothing but the LCM of B and A. दोनों क्या होता है? सेम है. So A star B is equal to B star A. Hence star is commutative. Star is commutative. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार इज एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिविटी हम लोग देखना है, स्टार एसोसिएटिव है और नहीं है. ओके, तो एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग 3 एलिमेंट्स कंसिडर करना है ऑफ द सेट. सो लेट A, B, C belongs to the set of natural number. B, any 3 elements, any 3 elements. Now A star B star C is equal to, जो ब्रैकेट में हमने रखा है A star B, तो इसको पहले ऑपरेट करना है. A star B means LCM of AB then star C is equal to LCM of A, B and C. Okay. And next we will find A star B star C. B star C bracket में है. So it will be operated first. Therefore A star B star C means LCM of B and C. फिर A star LCM of B and C means LCM of A, B and C. Hence A star B star C is equal to A star B star C. Therefore star is associative. Star is associative. The question number 4 is find the identity of star in N. तो हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है. So let E belongs to N, that is natural number, be the identity element. Identity element for the operation star. So A star is equal to A. This is the conditions of identity element. Sorry, A star is equal to A. A star means LCM of A and E is equal to A, and which implies that A is equal to 1. Which implies that A is equal to 1 belongs to N. Hence 1 is the identity element. 1 is the identity element for star. Next question is which elements of N are invertible for the operation star. तो हम लोग मान लेंगे let A belongs to N be invertible and B is the inverse of A. We'll consider let A belongs to N be invertible and B, which is an element of N, be the inverse of A. So A star B is equal to E, therefore LCM of
AB is equal to E here means the identity element, and identity element for star is 1. LCM of AB is equal to 1. It is possible only when A is equal to B is equal to 1. That is 1 belongs to N is invertible. For the operation star.